ओके सो अक्टूबर नंबर सॉरी मई जून 2020 का पेपर है ये आपका, मई जून 2020 का पेपर 22 ऑफ ओ लेवल्स यानी 5054। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो के आपका यहाँ पे इशू नहीं आया बेसिकली। ओके इट इज क्वेश्चन नंबर 11 बाय द वे, मैं समझ रहा हूँ पहला क्वेश्चन स्टेटिंग एक्सटेंट व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स detected in the aluminium in a minute as the radioactive source is moved, right, few centimeter further away from the source and more than uh, a meter away from the source. So is that radioactive source alpha source? Beta. 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 Okay. Emits beta particles. Yes, it is mentioned. तो इसका मतलब ये हुआ कि basically when a few further away, few centimeters away, तो nothing will happen. आपने state करना है और explain भी करना है। तो reason क्या है? Nothing change takes place. Right? Why? Because जो penetration है या they यानी they mean beta particle can pass through, ठीक है, pass through, जी बेटा सही है, ठीक है, few centimeter of air, ठीक है ना? सही है। अच्छा अब more than a meter away, तो more than a meter away में ये तकरीबन 10 मीन hundreds of a centimeter तक ये जाते हैं। 100 of a centimeter means 1 meter कंसिडर कर लेते हैं, तो the count rate would reduce. Count rate reduces. Why? Because अब आपने ये करना है because less energetic beta particles will not be able to reach detectors. ठीक है, less energetic का मतलब because beta particles have several type of kinetic energies, so less beta particles will be blocked. ठीक है, ठीक है। okay, the next question is okay, describe the conditions needed for the nuclear fusion to be taken place. तो nuclear fusion के लिए क्या conditions होती हैं? Very high temperature and high pressure. ठीक है, these are two simple conditions, very high temperature and very high pressure. सही है। ठीक है, तो basically these are the conditions for nuclear fusion to be taking place, and both these conditions are met at start. Okay, met जी at stars. Next is the question from your kinematics. हाँ जी। Okay, at time t is equals to 26 seconds, the front front of the sledge is 30 meter from the wall. Determine the distance between the front of the sledge and the wall when the sledge stops. So at this is 26 minutes. ठीक है, तो आप ये करना है कि you have to basically take the area of this part. Yes, डिस्टेंस अभी टोटल डिस्टेंस कितना है वॉल का और इसका, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये क्वेश्चन यही, बल्कि एक मिनट, यहीं से स्टार्ट होता है? हाँ, इसमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके ओके, द ब्रेक्स इज अप्लाइड एट 26 सेकंड्स। ओके, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द जर्नी 6.2 इज द स्पीड टाइम। ये यहीं से स्टार्ट है वाकई में? स्टार्ट है, लेकिन इससे पीछे कुछ भी, और मैं आपको इसके भी भेज दूं पिक? नहीं नहीं, बस ठीक है, सिर्फ एक दफा पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ है। कि फिगर 7.1 shows a child sitting on a sledge on a snow-covered hill of constant slope. At time 0, the child and sledge begin to move down the hill in a straight line. When the child sees a wall ahead, he applies brake. The child and sledge continues to travel in a straight line until they come to a stop before hitting the wall.
Okay. So this is the time when the brakes are applied. Okay, this is ठीक है। basically that time. उसने बोला ना 26 पे आपने brakes apply किए हैं, तो हाँ जी। when the brake is applied, तो आपने ये देखना है कि how much distance is covered by this by the braking force. So you will basically calculate the distance 1 upon 2 base times height. So what would be that? 26 से आप जाओ, 26 से 30 पे जाओ, तो this base is 4 and what is the height of this graph? आप यहाँ से हाइट कैलकुलेट करके दें मुझे फ्रॉम द ग्राफ. सो दिस इज बेसिकली दैट पार्ट, राइट? चेक करो कितना है ये. हाँ जी, एक मिनट। 12, 11, 12, 13, 14, 15 ऑलमोस्ट, हाँ जी, सही है। है ना? 15 है ना ऑलमोस्ट, हाँ बिकॉज इट जी। इज 13, 14, 15, नहीं 12 एक मिनट। और 4 का गैप है, 15.5 ऑलमोस्ट. उधर से चेक करो. आपका प्रिंटेड फॉर्म है ना? हाँ जी। ओके, चेक करो 15.5 ही है. Okay, what this was the speed of that. So calculations करके दो जरा जल्दी जल्दी मुझे शाबाश. 1.5 भी है। हाँ ओके, कैलकुलेशंस करके दो मुझे डिस्टेंस की. 31 meters। कितना? 30 31 meters। मीटर्स. ठीक है. तो अब आपने आपसे उसने पूछा है द फ्रंट ऑफ द स्लेज इज 35 मीटर. तो 35 मीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम वॉल टू दैट. जब आपने ब्रेक्स अप्लाई की, तो एक्चुअली मैं क्वेश्चन को पिक्चराइज कर देता हूँ. दिस इज अ वॉल एंड दिस इज अ स्लेज. सो वंस द ब्रेक इज अप्लाइड, द डिस्टेंस बिटवीन स्लेज एंड द वॉल वाज हाउ मच? क्या अपडेट? हाँ, क्या अपडेट? दिस वाज बेसिकली द टाइम. ठीक है, यहाँ से ब्रेक अप्लाई हुई है एंड हाँ एट द टाइम व्हेन इट स्टॉप्स. तो अब देखो उसने टोटल डिस्टेंस कितना है पहले इसके बीच में? शाबाश, बताइए जल्दी जल्दी बताओ. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? 36 था ना? हाँ जी, 35। 35, सॉरी. तो व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो नाउ योर स्लेज इज एट दिस पोजीशन, हियर एनीवेयर, है ना? हाँ जी। तो जब यहाँ पे है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो बेसिकली अब आप मुझे ये बताइए कि हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट नाउ, आई मीन हाउ मच डिस्टेंस दैट स्लेज हैज कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स. तो ये आपके पास है द डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड इज 31 मीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द डिस्टेंस यहाँ तक, सॉरी नॉट दिस पॉइंट. तो व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? दैट रिमेनिंग डिस्टेंस इज एक्चुअली 4 मीटर्स. ठीक है, तो दैट ठीक। इज व्हाई दिस विल बी द राइट आंसर. इज इट क्लियर? जी। ओके. So a student estimates the thermal energy produced in a battery when the mobile phone is used to uses a value of the estimated efficiency of the battery. He measures the temperature rise 5 degrees centigrade within the battery when in the time period of useful energy output of the battery is 5200 joules. The mass of the battery is 110 grams. Okay, the specific capacity of the battery is this much. Calculate the thermal energy required to need this raise in temperature. तो आपने ये complete नहीं किया हुआ. For this you will not get 3 marks. तो आपने लिखना है कि E is equals to mc delta theta. Once you will apply this equation, or you give some evidence, because that is of 3 marks. So in 3 marks, evidence is not enough only. You have to place the formula also. तो फॉर्मूला आपने प्लेस कर दिया. व्हाट विल यू डू नाउ? शाबाश. उसको अरेंज करेंगे वैल्यूज को। यस, mass is 110 grams, so it will be basically 0.11 kg, and specific heat capacity is 380, and change in temperature is how much? 5 degrees 5। centigrade. So you will get that, okay, this much the energy change. उसके बाद आपने क्या किया? State what is mean by the efficiency, the ratio of useful output, ratio of total, okay, useful output energy to the total input energy. Calculate the efficiency of the battery. तो efficiency of the battery के लिए आपने क्या करना है? Basically this battery is providing 460 joules of the thermal energy out of 5200 joules. तो आपके पास
एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज यूजफुल, out of 5200 460 is wasted. Are you getting my point? जी. Divided by total input is 5200 multiplied by 100. Yes, करिए शाबाश. 91%. 91% efficient battery है ये, right? How much efficient that is? 91%. Got it? जी सही है. Okay. Okay. Next गाने. Okay. Suggest and explain one reason why the value of the efficiency calculated in 3 is larger than the actual efficiency of the battery. बताइए जी. आपने जो एफिशिएंसी कैलकुलेट की ना, ये ज्यादा है. बैटरी 91% एफिशिएंट नहीं होती. ठीक है, तो आपने ये बताना है कि some of the energy is also wasted in the surrounding to heat up the mobile. Mobile भी heat up होता है ना? हाँ जी. Yes, so we have not calculated that energy. Some of the energy is lost to heat up the mobile. Heat up the mobile. So आप कह सकते हो कि so the useful output becomes more or less. ठीक है ना? Actually या practically useful output is more smaller than more smaller. या आप ये कह सकते हो कि wasted energy or lost energy या dissipated energy, you can use any word. Dissipated energy is one gram. Dissipated energy is more than 460 joules. ठीक है? Is it clear? जी सही. हाँ जी. और नेक्स्ट, बस यही काम था तुम्हारा, यही प्रॉब्लम से. जी. Okay, good. Who else have joined the class? Ariba. I did, sir. Good. अरीबा, ओके, अब तुम्हारे प्रॉब्लम्स की बारी है. ठीक है. Okay. ओके, इज़ा आपका और कोई इशू तो नहीं है बच्चे? नहीं. Okay, then stay in the class. Okay, Ariba queries 20 March 25 plus 24. Yes, Ariba. We did those yesterday. What was the file name? Ariba's topical questions. Yes. Okay, okay. बस तुमने फाइल नेम याद रखना है, बाकी मैं संभाल लूंगा. Okay, so this paper, okay, this is the topical paper. Okay. Just a second. So which topic is that? It's forces and energy.